Views like these are something that we city dwellers crave for. However, to come to such places for such views, you have to undertake a long trip. The thing is that in the Indian market, a long drive and Himalayas don't go hand in hand with an EV. However, the XUV400 thinks otherwise. Alright, that's starting off and first step to reset the trip meters. Trip A को करेंगे हम reset completely zero. इसके नीचे आपको average speed भी आती है and then we go to the trip B, reset and average speed नीचे. Moving on, ये हमारी speed है, temperature outside, settings and very important the distance to empty. We are starting off with 68% and highway पे जाके we'll do a fast charging as well. Time to load. So 52 kilometers into the road trip and 20% battery has been consumed. So that's not bad, almost 3 kilometers per 1% of usage. Keeping around 80 on the speedometer. AC of course is running. More updates coming soon. सुबह दिल्ली के अंदर ट्रैफिक कम थी, सो दिल्ली को छोड़ के हाईवे पे आना आसान था. हाईवे इज NH44 जो इंडिया का लॉन्गेस्ट हाईवे है. कश्मीर से जाता है कन्याकुमारी. नाउ हाईवे स्पीड्स पे ईवी गाड़ी के अंदर आप इतना रीजन जो बैटरीज का वापस चार्जिंग होता है, रीजन आप इतना इस्तेमाल नहीं कर पाते बिकॉज कांस्टेंट स्पीड है. नेवरदलेस 80 ऑन द स्पीडोमीटर, एसी रनिंग, 2 लोग लगेज फीचर बूट के अंदर. हमने करे हैं 20% ऑफ बैटरी के अंदर 52 किलोमीटर्स, मतलब कि 2.6 किलोमीटर्स फॉर 1% ऑफ यूसेज. आई थिंक नॉट बैड गिवन दी ओवरऑल सिनेरियो. बट क्या ये चीज रहेगी गोइंग फॉरवर्ड? वेल, फिंगर्स क्रॉस्ड. एक चीज जो मुझे पसंद नहीं है रोड ट्रिप्स पे वो है वेट करना टोल लाइंस पे. इन स्पाइट ऑफ फास्टैग, एज यू कैन मेक आउट, वी आर स्टिल स्टॉपिंग, द ट्रैफिक इज नॉट मूविंग. ये कुछ दिन पहले हम गए थे ग्लॉस्टर के साथ टू अ वेरी सीरी लोकेशन राजस्थान. वहाँ पे इन राजस्थान वी हैड अ टफ टाइम एट टोल प्लाजास. वो वीडियो आने वाला है बिकॉज ऑल ब्लैक ग्लॉस्टर इन द मिडल ऑफ वाइड लैंडस्केप, डोंट मिस दैट. चलो लेन निकलना शुरू किए. टॉकिंग टू यू, इट सीम्स टू बी लकी. यस, मूविंग नाउ फाइनली एंड करनाल पे जाके विल टेक अ ब्रेक फॉर आवर बेलीज एंड फॉर द बैटरी. गाड़ी भी खाना खाएगी, हम भी खाना खाएंगे करनाल पे. So hiccups are part of any road trip. जो पहले वाला चार्जर था वो काम नहीं किया था, so you can make out different location. Still fingers crossed to see कि if this works or not. Now this car is starting to impress me a lot. Ever since we left the charging point, I started raising the speeds of cruising from 80 towards 90. In spite of that, in 20% charge, it's done 56 kilometers. That's almost 2.6, 2.7 kilometers for 1%. So even 90 kmph as a cruising speed with the AC running, it is efficient. Point to be noted, we left at 78%, but within 200 meters it dropped to 77. So my base now is 77%, and with the 57% battery being left, 56 kilometers done, not bad, not bad. We should be hitting the base of the hills in approximately just over an hour's time. But just to be on the safer side, we'll again juice up quickly before the climb starts towards our destination. So हम हैं अभी चंडीगढ़ के आउटस्कर्ट्स पे, पंचकुला पे, एंड इन द लास्ट 44% हमने करे हैं 124 किलोमीटर्स. Simple calculation, 2.8 kilometers to every 1% of usage. I think really good given the speeds and the AC running. यहाँ से because now we only have 1/3 battery left, एक quick stop करेंगे again at a DC fast charging, juice up करेंगे and then we hit the Himalayas.
5 minutes of leaving the charging station. What views around! Himalayas can be magical in monsoon. This state of Himachal too good in monsoons. Charge went up to 93% जब निकले थे हम वहाँ से, and taking up it a bit slowly right now, 60-70 on the Himalayan expressway. I hope the views they remain nice, and I also hope that the battery backup is sufficient enough for us to keep on going in this beautiful journey. पहाड़ों के अंदर ऑफ कोर्स इट्स अपहिल एंड क्वाइट स्टीप इन टाइम्स ओवर हियर, सो उसकी वजह से स्ट्रेन आता है मोटर पे एंड बैटरी पैक पे. 20% इस्तेमाल करके 28 किलोमीटर्स किए हैं, बेसिकली 1.4 किलोमीटर्स पर 1%. स्टिल नॉट बैड एंड द व्यूज आर सिंपली सुपर्ब. This is seriously crazy weather with the monsoon in all its fury in Himachal Pradesh. You can possibly hear the sound of the droplets on the windscreen and the sunroof. Raining heavily, a lot of, you saw that, a lot of puddles on the highway. Crazy, but in such environments, if you always thought an EV might not be your best friend, well, I don't think so. That's a wrong notion. The XUV400 just feels comfortable. We are just going along in a very silent manner in the middle of this fury. Wasn't expecting so much rains, but yeah, this is what Himachal can surprise you with. And then rains finally took a halt, giving us views like this. और शाम होते हम पहुंचे अपने नाइट डेस्टिनेशन पर. So yes, yesterday was an adventurous day with the XUV400. The thing is कि आज है 8th of July and IMD ने करा है प्रेडिक्ट फॉर एन ऑरेंज अलर्ट इन द स्टेट ऑफ हिमाचल. इसका मतलब है कि बारिश और भी होने वाली है, लैंडस्लाइड्स का खतरा है, ट्रैफिक जाम का खतरा है. हमारा प्लान था टू एक्सप्लोर द एरिया मोर, बट टू प्ले सेफ वी विल नॉट बी डूइंग दैट. वापस चलेंगे दिल्ली की तरफ. ओवरनाइट गाड़ी को मैं चार्ज किया था फॉर अ फ्यू आवर्स. 41% पे कल पहुंचे थे, 76 हो चुका है. इट्स पोरिंग वंस अगेन, एज यू कैन सी. मैं गीला हो रहा हूँ, बारिश रुकने का नाम नहीं ले रही. तो सेफ्टी के लिए खाना खाते हैं और निकलते हैं यहाँ से बैक टुवर्ड्स दिल्ली. फिंगर्स क्रॉस्ड फॉर व्हाट्स गोना हैपन ऑन द रूट टुडे. Thankfully, route back was not that difficult, and we also took some drone shots for you guys before the rain started. इन शॉट के बाद हमने सफर कंटिन्यू किया टुवर्ड्स दिल्ली और वहां तक बारिश हमारे साथ रही. गुड न्यूज ये थी कि डाउनहिल होने की वजह से रीजन काफी काम आया. 89 kilometers in only 13% of battery usage. You have just come down the hills, and this is what can happen with an EV because of the regen coming in and less effort as altitude comes down. 13% and almost 90 kilometers. इस ट्रिप ने ये प्रूव किया दैट एक सीनिक हिमालयन ट्रिप आप EV के साथ भी कर सकते हैं, प्रोवाइडेड प्लानिंग ठीक हो एंड राइट प्लेसेस पे चार्जिंग का टॉप अप करते रहें. In fact, we are pushing the boundary even further. अगले महीने एक EV के साथ लद्दाख. I kid you not. Stay tuned and subscribe करें मेरे चैनल को और जो बेल आइकन है उसको जरूर दबाएं so that उस वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले.